ঘৰৰ কইনাই ফিৰাল বুলানি শিকিক বুলিয়া উবাচিতা আমি আসলে আমার সংস্কৃতি হান চিন্তা করে থইক বুলিয়া আমার হরিয়ল যেটা আছে তানো ঠাইতে ফিরাল বুলানি হান শিকিক বুলিয়া আমি লেপচিতা Hello everyone, this is Tipika here and welcome back to my channel. Today is a very important day for Vishnupriya Manipuri people. It is the day of Firal today. As we know that India is land of festivals. India is home to multiple cultures and religion, and everyone have their own festivals. Similarly, Vishnupriya Manipuri people have their own festivals and raising of Firal is one of them. Now the question is, what is Firal? What is the essence of this Firal? Firal resembles a flag, which indicates that Jagannath Mahaprabhu, who is the 10th avatar of Lord Vishnu, has come back to earth from his long sayan or his sleep. Dear viewers, today I will show you how the Vishnupriya Manipuri community performs their cultural preparation, from preparation of Firal to its raising. Today I will try to draw your attention more on the process and the reasons behind it. My video is a dramatical representation, may have differences with others' point of view, but I have no intention to hurt other sentiments if it does not matches with others' point of view. So, come with me. As the month of Kartik, as per our Bengali calendar begins, Vishnupriya Manipuri people believes that Mahaprabhu Jagannath has come back to earth from his long sayan or his sleep. Since earlier days, it has been a tradition for every Vishnupriya Manipuri people who would prepare their own Firal and is being raised near the Tulsi Plant Foundation area to mark the occasion. During this occasion, before raising the Firal, certain preparations like Era Tanka, a betel nut with a betel leaf, is being neatly cut and placed over a circular cut banana leaf along with a Borti holy flame and Dhupkati incense stick, also placed over a circular cut banana leaf, are being offered to Mahaprabhu. And of course, fruits are also offered, which are later consumed by the family members as prasad. After doing this ritual, the Firal is raised by one of the family member. The timing for raising the Firal is followed according to the Panjika, a book based on astrological timings of both good and bad situations of everyday life authored by religious scholars. After raising the Firal, the entire family bows down below the Firal to offer prayers for the well-being of the entire family as well as for the entire mankind. This marks the end of such an auspicious occasion of the Vishnupriya Manipuri community.
फिराल क्या गुप्तारा फिरालर इम्पोर्टेंस आन की है मैं वहाँ माता फिरालर इम्पोर्टेंस माने रथयात्रार फिरारथर दिने पिछेकार दिने एकादशी ও एकादशीर दिने हरि शयने जारगा कृष्ण शयने जारगा कोनो कोई मातारा पाताले जारगा किन्तु शयने जारगा पान्नी हार पास शयन माने निद्रा ए निद्रा ना तो जाग्रत जेटा कार्तिकर हरिर ठानर दिने एकादशीर दिने कोनो कोनो दिन द्वादशी करे फिराले हान दिते फिरालु हानलो तार आमी इयो करियाता जे जा जाग्रत जागिल प्रभु उठिल घुमेर तो आदरणी मान जानिया फिराल हानलो उहानलो फिराले हानकु पानी ओता बारो हरि शयনের সময় কোনো শুভকর্ম করানি না শুভকর্ম বুঝতে যেমন মৃত্যু উদাতে শ্রাদ্ধ উদাতে ইয়া জিতইগা কিন্তু এর গ্রহণ তুলতে যেমন যাত্রা দেনা বিয়া দেনা বিয়ার আলাপ আলোচনা প্রস্তাব এটা করানি গম নেই কারণ স্বয়ং প্রভুতে নিদ্রাত আছে আনতে हरि थानर पिछे যত শুভকর্ম আছে হাব্বি করানিয়া করে উহালরে ফিরালে আনতাং তারাটা ফিরালে আন দিলে প্রভু জাগ্রত উঠিল বলিয়া তার আদরণী জানানি ওটা According to Vishnupaya Manipuri mythology, Lord Jagannath, who is reincarnation of Lord Vishnu or Lord Krishna in Kali or Kalki, goes to sleep after Ekadashi day, the day after Rath Yatra or our Khachuri Pali completes. He sleeps for 4 months, Ashar, Shawan, Bhadra and Ashwin. During these 4 months, all religious and good deeds are kept on hold by Vishnupaya Manipuri people. When Lord Jagannath wakes up in the month of Kartik, that is called Hari Utthan. Hari means Lord Jagannath and Utthan means awakening. Hence, we Vishnupaya Manipuri people let ourselves know, which indicates that we can begin our all necessary and good deeds by raising our firal in every Vishnupaya Manipuri household. Now the question arises, from where do we get this firal and how it is being waved? If you want to know this, stay connected with me. Now have a look this video. The woman or Ima first lays down the threads with one end tied to the kanappa, a vulgar circular wooden stake, where the neatly separated threads are wrapped slowly. This is then fitted to the jal, a wooden structure specially designed for weaving traditional clothes. The woman then sits on the jal and starts weaving further using the lanchak, a boat-shaped wooden structure cut in the middle to fit the jam, a circular bamboo stake which is wrapped with threads for horizontal use. Slowly and finally, the actual shape of the firal is given, and further preparations like use of colorful artificial flowers and other designing items are added to give a beautiful look to it.
ঘৰৰ কৈ নাই ফিৰাল বুনানি শিকিক বুলিয়া বাচিতা আজি পিয়া আমি বাছত টিহান ফিৰাল বুনিয়ালৈ করলাম একশন পিয়া বুনতাঙাই বুলিয়া আমিও বাসি তার মাঝে বুনিয়ারও তার মাঝে একটা হাজিয়া থুসি একটা বড় না হাজিয়া থুসি উল্লাং ফিরাল তার মাঝে রাজনগরে কতক্ষণ ফিরাল গেলগা বারা गुवाहाटीर বিভিন্ন জায়গাত তো অর্ডার আহে चुनौतियों का हंसकर स्वागत करने वाली महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं। कल तक भावनात्मक रूप से कमजोर महिलाएं आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है और अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसले स्वयं कर रही है। अपनी क्षमताओं से महिलाओं ने आज पुरुषों को भी पीछे छोड़ते हुए परिवार और समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आत्मनिर्भर बनकर आज महिलाएं हर चुनौतियों का सामना कर रही हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।